Hey guys, welcome to the session. Okay, I hope I am audible and I'm live now. So let me just check the technicals. Okay, so it's working perfectly. Yeah. Okay, so guys, let me tell you the plan for today's session. This is a session on Snap strategy and the sort of questions that we expect on Snap. Now, guys, I think this is one question that many people have that what should be our strategy for the verbal section and what sort of questions do we expect on the Snap, right? तो आज के सेशन में हम वही करने वाले हैं फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्नैप ओके सो व्हाट इज स्नैप ओके व्हाट sort of questions do you expect and the most important questions how many questions should I attempt to actually get a call from SIBM SCMHRD SIOM SIAB ठीक है because a lot of people don't have that idea as to how much questions how many questions actually how many questions should you attempt then after that for the first 10-15 minutes we will talk about the pattern and you can ask me questions. Okay, hello Vidit, hello Sarthak, hello Pragya. Okay, so yeah, Pragya, Vidit, and Sarthak, I'm going to tell you the whole plan as to how the preparation has to be done, and I will also talk about the verbal ka strategy pura, and then this is something that we're going to do in the first 15 minutes, and then we move on to the actual questions, right? And you will realize that that snap is not a difficult exam, but then you need to put in a lot of attempts. Okay, so chalo guys, let's get started, and let me get started with the session. Okay. Uh, okay, so guys, this is what my percentile was in the CAT. Okay, so my name is Himanshu. By qualification, I'm an MA and MPhil in English Literature. I have 10 years experience of CAT training and I've scored a 99.74 percentile on the CAT section, CAT verbal. So guys, I've been training for the last 10 years and today we are here to actually talk about one more exam apart from CAT, that is SNAP. Okay. So guys, this is what the agenda of today's session looks like. Okay, first we talk about the pattern. 2018-2019 का pattern क्या था? What was the pattern? What was the breakup of the questions? Then we look at the snap 2020 expected cutoff. Okay, what is the expected cutoff? Expected number of questions that you need to attempt to get to clear the cutoff. Then we talk about the strategy, and then finally we talk about the snap pattern question. That means I'm going to actually pick up questions and we're going to discuss all those questions. So the questions are primarily from vocabulary and grammar for the very obvious reason that we have been already doing the reading comprehension. So we are pretty much pretty much equipped to handle reading comprehension. तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग के अंदर as such किसी को प्रॉब्लम आएगी. Okay, so guys, you can join our YouTube channel and Telegram channel that you can see. Okay, so guys, this is something that you need to keep in mind. Now, basically, right now I'm putting sessions on the app. Okay, so that is your Unacademy app. So if you do not follow me on the Unacademy app, guys, you can do that. Now whether you go in for the paid version or for the free version, okay, so there's this code that I have, okay, that you can always use, and the code is HSync. So guys, what you have to do, even if you are planning to download the app for the free content, okay, अगर आप free content भी access करना चाहते हो, right now I have more than 15 sessions on the app and around 3 sessions are on vocabulary, and the next 1 month I'm going to put out some more sessions. I think approximately 4 sessions per week आपको मिलेंगे, ठीक है? तो so 4 sessions on the YouTube platform and 4 sessions every week on the app platform. When you access the free content or when you go in for the paid content, वो use my code HSync, ठीक है? दोनों ही केसेस में आपको इसमें बेनिफिट है. Okay, if you are someone who is looking at a long term strategy for 1 year, then if you use my code, okay, you get a 10% का डिस्काउंट. Okay, so 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है and your fees is reduced by 10%. Now the most economical plan that we have is for 1 year, or you can go in for 2 year plan also, even if you are following me on the app for the free content. So right now guys, I have around 15 free sessions जिसमें vocab के around I think 1000 words मैंने cover किए हैं, ठीक है? तो वो आप access कर सकते हो, ठीक है? आपके grammar के sessions हैं and you just have to follow me on the Unacademy app. Okay, so I will put out the link. Those of you who are already with me on the WhatsApp group, okay, so obviously I can share the link with them on the WhatsApp also.
सो गाइज फ्री कंटेंट आपको जो उसमें एक्सेस करना है, ठीक है, 1000 वो कैप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको व्हेन यू डाउनलोड द ऐप, ओके, यू कैन पुट दिस कोड and even if you go in for the free content, okay, this is something that will help you access that. And obviously for the paid content, okay, you get a 10% ka discount, okay, so this is what my code is. Okay, so guys, moving on. Okay, so this is my code hsync, and some of you can access this, like use this code. Okay, it helps the algorithm to identify like the popularity of the course, so it helps me in a way. ठीक है, अच्छा, तो चलो आते हैं, देखो आप मुद्दे की बात पे. Okay, now let me come to the basic, like the main thing, right? Okay, so what is the Snap syllabus? Okay, so guys, these are the topics that we have on the English section of Snap. Okay, the first topic that we have is parts of speech. Now, parts of speech is something that we haven't seen in any other exam. जहां तक मुझे लगता है कि किसी और एग्जाम में parts of speech नहीं आता. Okay, so parts of speech is sorry, figure of speech नहीं आता. Sorry. Okay, parts of speech तो खैर आता है. ठीक है, figure of speech, like you don't have figure of speech in many exams. Okay, but then in the Snap exam you have a topic called figure of speech. Okay, parts of speech is basically your grammar. So you have nouns, pronouns, adjective, adverbs, conjunctions, prepositions. Okay, so all the grammar topics or grammar based topics. Okay, so अब यहाँ पे जो एक चीज रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट वो ये दैट a lot of us have not seen grammar for the last like I would say like 5-7 months, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा था कि कैट में मोस्टली लाइक ऑब्वियसली यू डोंट हैव ग्रामर, सो वी हैव बीन निग्लेक्टिंग आवर ग्रामर. ठीक है, अब देखो यार, मैं यहाँ पे दो तीन चीजें आपको सजेस्ट करता हूँ. वन इज दैट जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, एंड सेकंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, देखो गाइज, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, इनमें सब कुछ मैं नहीं कर सकता. ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट. Now, assuming that you have a certain amount of certain limit of time to study, obviously we're looking at the most important questions from all these chapters. अब यहाँ पे देखो दो चीजें रहेंगी. I would be putting out a lot of sessions. ठीक है, so if you are my student, okay, and you have been following me on the last YouTube channel, and if you are connected with me on the app, okay, so you must have seen that for every session I normally take around 30-35 questions. ठीक है, तो वो 30-35 questions तो आपके per day हो ही रहे हैं. ठीक है, so that is one. Second, in the last two sessions that I put out on the previous YouTube platform, तो वहां पे हम लोगों ने मैंने दो सेशंस लिए थे. ठीक है, उसमें आई थिंक आई कवर्ड अप्रोक्सीमेटली स्नैप 2013 का, 14 का, 15 का और 16 का सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया था. ठीक है, अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट ओके, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्नैप क्वेश्चंस. इन टुडे सेशन आई हैव टेकन सम 2019 का क्वेश्चन एंड सम क्वेश्चंस दैट आर जस्ट लाइक 2019 का क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, सो यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस पेपर्स, क्योंकि वो मेरे सेशंस में ही पेपर सारे कवर हो जाएंगे. नाउ 1000 वर्ड्स का लाइक है ना, आई हैव मल्टीपल सेशंस ऑन द ऐप. ओके, सो यू कैन गो थ्रू द ऐप. ठीक है, आई वुड पुट आउट द लिंक एंड यू कैन एक्सेस दो सेशन, राइट? ठीक है, तो एक तो वो बात हुई, वो कैब में 1000 वर्ड्स का तो मैं बना चुका हूँ. ठीक है, 250 वर्ड्स का एक सेशन है, टू सेशंस आर ऑन ऑन रूट ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, तो वो सब देख लेना. बाकी अदरवाइज एवरी वीक वी आर गोना हैव 4 सेशंस ऑन यूट्यूब एंड 4 सेशंस ऑन द ऐप. ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वोकैब हो जाएगी वहां से. ठीक है, बाकी आप लोग जो अपनी तरफ से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट यू डूइंग. So vocab based questions. Okay, so vocab based questions भी हैं अपने. ठीक है, you have a lot of vocab based questions. You have questions from fill in the blanks. You have questions from synonyms, antonyms. You have questions based on word substitution. ठीक है, so vocabulary based questions. Active passive, guys, ये टॉपिक किसी एग्जाम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है. एक्टिव पैसिव भी यहाँ पे हमारे को मिल जाता है. ठीक है, so we have active passive also in this exam. Okay, then obviously reading comprehension. Reading comprehension is something that is of a very basic level. Okay, so reading comprehension is there. Very basic level ka reading comprehension is also there. Okay, so obviously that is there, but then obviously the time that we have for snap is like per session पे मैं 10-12 minutes का investment मान रहा हूँ. तो reading comprehension में सारे questions करना तो impossible है, but then yes, we will do as many questions as possible. Idioms and phrases. Okay, so idioms and phrases करने. Idioms and phrases is something that we haven't been doing. Okay, so I'm going to take a session on idioms and phrases also. So idioms and phrases is also one topic that we have. Verbal analogy. अब यार verbal analogy का देखो फंडा क्या है. You realize that the logic wala section has the highest weightage. Okay, now in the logic wala section you have questions on verbal analogy, and every year you find 2 to 3 questions. Basically मुझसे पूछोगे आप तो vocab based questions ही होते हैं. ठीक है, logic में count हो जाते हैं. ठीक है, so point is कि जो अभी वेटेज 15 क्वेश्चंस का, एक्चुअली इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज लाइक यू हैव 3 to 5 क्वेश्चंस दैट आर
indirectly based on English. तो verbal analogy is covered in that, right? Paragraph arrangement. Now guys, last year paragraph arrangement नहीं आया था, ठीक है, but then we don't know. Okay, paragraph arrangement again, guys, I believe that most of us have already practiced a lot of paragraph arrangement, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई special आपको preparation की जरूरत है. The only two things you need extensive preparation in the next 1 month is your grammar section and your vocabulary का section, ठीक है. दो sections जो हमारे majorly weak है, ठीक है. बाकी RC और पैराजिम्बल्स वगैरह तो मुझे लगता है कि भाई वी हैव बीन डूइंग a lot of it, right? काफी कुछ हम लोगों ने कैट में वैसे भी कर लिया. Okay, so now guys look at the breakup of the 2018 का पेपर, ठीक है. 2018 का पेपर स्टडी करते हैं. Let's see. Now total verbal questions in 2018 were 35. Okay, 35 questions total अपने आए थे, ठीक है. 35 questions were there. Out of those 35 questions, 8 questions were from reading comprehension, 8 questions were from grammar, 3 questions were from sentence improvement, 2 questions were from fill in the blanks. Okay, 2 questions were from figure of speech and idioms, and 3 questions were odd one out. Vocabulary based was 7 questions, and spelling based were 2 questions. Okay, so what was happening that the major part of the paper, okay, was either grammar or vocabulary. Again, vocabulary में spelling को भी add कर दो तो 9 questions के around आपके बन जाते हैं, ठीक है. odd one out के अंदर भी, ठीक है, you have to see that okay, odd one out is basically parajimbals only, right? Okay, so you have to find out which is the odd sentence, and then you have fill in the blanks. Okay, fill in the blanks are either vocab based or grammar based. So there was a good percentage of questions from grammar, and there was a good percentage of questions from vocab. Okay, directly or indirectly based on vocabulary. अब देखो यार surprising चीज क्या हुई 2019 में. Okay, now when you look at the 2019 का snap, okay, now you realize that the number of questions is 34, but out of those 34 questions, 19 questions are based on vocabulary. Guys, the strange thing about 2019 was that in 2019 का paper, in 2019 का paper, you realize that vocab based has suddenly increased. Okay, now vocab based means you have questions on vocab based, like your synonyms, your antonyms, you have fill in the blanks, you have questions based on like the vocab that is indirectly based in passages. Okay, but total you have 19 questions that are vocab based, 7 questions are grammar based, and then you have 8 questions that are based on reading comprehension. But यार यहाँ पे एक चीज समझनी है कि reading comprehension वाले पार्ट में थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लगता है. So most people try to capitalize, most people try to dominate the snap through the vocab and grammar वाला section, ठीक है. तो या तो आपका लिमिटेड टाइम में या तो आपको ग्रामर होगा या वोकैब होगा. 2019 के पैटर्न के अंदर आपको पैराजिम्बल्स वगैरह सब कुछ नहीं मिले, ठीक है. सो ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. ओके, नाउ लुक एट दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन स्नैप 2020. ओके, नाउ as we all know, if you don't know, then I'm telling you that total questions that you have on the English section is 15. Okay, now the total questions on snap is 60. ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट है. देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. दैट मींस यू कैन टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल, बट देन प्रॉब्लम इज कि ऑब्वियसली you won't want to exceed beyond a certain level because आपको हर जगह से easy क्वेश्चन स्कोर करने हैं. 15 questions are there, okay, in verbal, and out of total 60, okay, 15 questions means 1/4 का वेटेज, ठीक है. बट अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज है. अब यहाँ पे देखो फंडा क्या चल रहा है, ठीक है. एक्सपेक्टेड टाइम जो आपको चाहिए स्नैप 2020 के अंदर, दैट इज अराउंड 10 to 12 मिनट्स के अंदर आपको इंग्लिश का सेक्शन पूरा खत्म करना है. नाउ सम ऑफ यू माइट इवन टेक 15 मिनट्स, बट आई बिलीव दैट 10 to 12 मिनट्स के अंदर यू कैन इजीली लाइक निपटाओ दी होल सेक्शन, ठीक है. आराम से इजीली खत्म कर सकते हो आप, पैसेजेस इंक्लूडिंग. बट पैसेज का मैं वही फंडा बोलूंगा कि पैसेज के अंदर आप पूरा ना करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है. लाइक यू कैन जस्ट पिक अप क्विकली जो इजी क्वेश्चंस है, बिकॉज गाइस द टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो सेक्शनल ब्रेकअप अपना क्या रहेगा, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, ठीक है. देखो इंग्लिश के अंदर यू हैव 15 क्वेश्चंस, ओके, 15 क्वेश्चंस ऑन द इंग्लिश. लॉजिक के अंदर यू हैव 25 क्वेश्चंस, ठीक है. लॉजिक में यू हैव 25 क्वेश्चंस, ठीक है. क्वांट प्लस डीआई का अभी अपने पास है, क्वांट प्लस डीआई का अपने पास है 20 क्वेश्चंस, ठीक है. सो इंग्लिश का 15 है, लॉजिक का 25 है, क्वांट प्लस डीआई का 60 है. टोटल अपने पास 60 क्वेश्चंस है, 15, 25 और 20, ठीक है. 15 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस ऑन लॉजिक एंड 20 क्वेश्चंस ऑन क्वांट एंड डीआई. नाउ the minimum number of attempts that you need in order to get a 99 percentile or 98 percentile is 50 plus, ठीक है. तो अभी 50 plus मुझे लाने हैं,
ठीक है, क्योंकि मुझे अगर SIBM की कट ऑफ क्लियर करनी है, SIBM पुणे की, तो मुझे 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। 99 परसेंटाइल के लिए आई नीड एटलीस्ट 50 प्लस का अटेम्प्ट, ठीक है। और बाकी कॉलेजेस भी हैं, उनके लिए भी मुझे मोर और लेस 45 प्लस तो चाहिए ही चाहिए अटेम्प्ट्स, ठीक है। अभी वो अटेम्प्ट्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, जस्ट ट्राई टू सी दिस नाउ इन इंग्लिश। ओके, आई वुड रिकमेंड दैट यू डू अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 12 to 15। दैट मीन्स मिनिमम 12 तो करने ही करने हैं, और अगर आपसे पूरा सेक्शन होता है तो पूरा सेक्शन कर दो। लॉजिक में, बिकॉज लॉजिक के जो 15 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा जल्दी जल्दी अपन फास्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो 25 में से यू कैन मैनेज टू डू अराउंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है। द 20 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट। क्वांट प्लस DI के अंदर, ठीक है, यू हैव लाइक 20 क्वेश्चंस, ओके। 20 क्वेश्चंस में अगेन वही फंडा है कि भाई थोड़ा सा स्पीड के ऊपर अपना ब्रेक लग जाता है, ठीक है। ओके, तो ब्रेक इसलिए लग जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस इजी नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर आप 15 to 17 क्वेश्चन जितने हो जाएं उतने आप इसमें अटेम्प्ट कर दो। नाउ व्हेन यू टोटल दिस अप, ओके, इट कम्स आउट टू बी 50 प्लस का अटेम्प्ट, ठीक है। अभी इसको आप टोटल कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस का अटेम्प्ट हो जाएगा। व्हेन यू अटेम्प्ट 50 प्लस, देन यू गेट अराउंड 40 प्लस करेक्ट, ठीक है। सो गाइस 40 प्लस करेक्ट करने के लिए मुझे 50 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 40 प्लस अटेम्प्ट का मतलब 42 भी सही हो सकते हैं, 43 भी सही हो सकते हैं। और अगर मुझे 40 प्लस का स्कोर चाहिए, ठीक है, तो 50 प्लस के अटेम्प्ट, और 50 प्लस के अटेम्प्ट के लिए आई नीड 12 से 15 क्वेश्चन, 12 to 15 क्वेश्चन ऑन द इंग्लिश सेक्शन, अराउंड 20 क्वेश्चन ऑन द लॉजिक वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 5-6 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, बिकॉज टाइम ही बहुत कम है, 1 मिनट पर क्वेश्चन अपने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन क्वांट प्लस DI के अंदर लाइक यू नीड 15 to 7 क्वेश्चंस, 15 to 17 क्वेश्चंस, राइट। And then you get a 50 plus ka attempt, and out of those 50 plus, okay, we are expecting to get 40 plus correct on in total, okay, 40 plus correct honge, then we have some chance, then we get a good enough chance to get calls from the good colleges, because जो SIBM है उसका 99 प्लस कट ऑफ है, ठीक है, 98 प्लस आपका SC MHRD का है, ठीक है। देन यू हैव SIIB एंड ऑल दोस, ठीक है, जो कि जनरली 95 प्लस की रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो एवरेज कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली दे आर मच लोअर, but then these are the best colleges that we are looking at. So my suggestion is that if you are looking at the English section, और मैं आपको reason बताता हूँ, देखो English section is comparatively easy. If you are someone who is looking at English section, okay, let me tell you one thing, that English section is comparatively easy. So some of you might think that okay, I have written 12 to 15 attempts on the English section. 12 to 15 attempts यार उतने ज्यादा नहीं है, आराम से अगर आपको vocab और grammar का थोड़ा बहुत भी आपको idea है, you can easily do 12 questions on English section, उतना ज्यादा difficult नहीं है, because English is not like maths or logic that takes time, right? मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस के ऊपर आप जाओगे तो आपको आपको स्पीड पे ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, स्टार्टिंग वाले इजी होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, 10 to 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, एंड द टारगेट स्कोर इज, टारगेट अटेम्प्ट इज 12 to 15, ठीक है। तो या तो इंग्लिश का सेक्शन आप चाहो तो आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर 12 के अराउंड अटेम्प्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली योर नॉलेज एंड ऑल दैट, ठीक है। बाकी सेक्शन इजी आता है, सेक्शन के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वोकैब और वो सब अपने को पढ़ना पड़ेगा, वोकैब एंड ग्रामर। Okay, strong week is coming in. Yes, Vibhor, I would answer a question. Actually, see, what is happening that you will have questions of verbal reasoning, which is basically English only. Okay, so you have strong and weak arguments in the reasoning section, and you also have verbal analogy. Okay, अभी verbal analogy is basically vocab. Okay, verbal analogy is basically vocab. ठीक है, अभी उसको उन्होंने लॉजिक में काउंट किया, तो अभी ठीक है वो लॉजिक के अंदर वो लिखते हैं, बट द आइडिया इज दैट इवन दो दे राइट इट इन द लॉजिक सेक्शन, ओके, we cannot deny the fact that it's indirectly based on English only, right? ठीक है, when you have questions on strengthening the argument, you have questions on weakening the argument, ठीक है, you have questions on course of action, ठीक है। अभी कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा या स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट रहेगा, अल्टीमेटली है तो इंग्लिश ही यार वो, राइट। ओके, सो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दोस टॉपिक्स आर आल्सो देयर। मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बट अगर आप उनको भी इंक्लूड कर दोगे तो इंग्लिश का वेटेज कुछ अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल पेपर हो जाता है, ठीक है। फिर एज्यूम की ठीक है यार वो सेक्शन भी अपने इंक्लूडेड है, ओके। चलो, so I hope you have now understood the pattern, okay, and I hope I have given you some clarity. Okay, the idea is to do around 12 questions, 12 to 15 questions in English, okay. The idea is to invest around 10 to 15 minutes, 15 मिनट्स के बियॉन्ड मत जाना, ठीक है। 12 मिनट्स इज द आइडियल टाइम। 12 मिनट में इंग्लिश का पेपर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12 मिनट्स के अंदर इंग्लिश का सेक्शन आप पूरा निपटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, ठीक है। 12 मिनट्स के ऊपर क्रॉस मत करना, नहीं तो क्वांट वगैरह में तुम्हें टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस तो आपके
10 20 50 ऐसे जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है, 10 seconds 20 seconds like that, right? Okay, so okay, now before I start with the questions, let me just tell you two things, okay, actually two things, okay, before we get started. Okay, so the thing is that those of you who are planning to do vocabulary, okay, and haven't got a strategy, one thing that you can do in the starting is that you can actually go and access some of my sessions that I have on the app. Okay, so on the Unacademy app, if you follow me, you will find that there are three or four sessions, I think, which cover a good number of words. ठीक है, तो आप वो चीज कर सकते हो. And then obviously you can watch my sessions of vocabulary, because vocab is something that I would be taking regularly. तो वहां पे कुछ काफी सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. ग्रामर का, ठीक है, यू विल कीप लुकिंग एट, टुमारो यू हैव अ ग्रामर का सेशन ऑन आर्टिकल्स. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, ओके, इट्स ऑन द ऐप. ओके, सो दोज ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो उनको तो मैं लिंक भेज चुका हूँ, ठीक है, उसका आपके ऐप का, ठीक है, तो उसमें यू विल फाइंड एट 4 o'clock टुमारो आर्टिकल्स का सेशन, ठीक है, सो वी विल हैव अ डिस्कशन देयर, राइट. और मुझे देखो मजा उसी में आता है कि भाई अपन डिस्कशन मोड में करें, ठीक है. नाउ दोज ऑफ यू हैव बीन अटेंडिंग माय क्लासेस, ओके, नो दैट आई लाइक पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, लाइक पीपल टू आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा एक क्या कहेंगे अपन, लाइक है ना, उससे थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है. एंड ऑन संडे, नॉट संडे, सैटरडे, आई हैव केप्ट द सेशन ऑन टेंसेस, ठीक है. नाउ दैट सेशन इज अगेन गोइंग टू बी ऑन ऐप, एंड देन यू हैव लॉट ऑफ वोकैब का एंड ग्रामर का सेशंस ऑन द यूट्यूब आल्सो, ठीक है. So, okay, okay, close test यार देखो, close test is basically vocab only, but I would say that instead of looking all these section as close test and synonyms, antonyms, I would just say that they are vocab based questions, ठीक है. बाकी क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं आते, ठीक है, मुझे लास्ट ईयर तो इतना कहीं दिखा नहीं कुछ क्लोज टेस्ट जैसा, बट देन यस, मे बी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने पूछे हो, बट आई डोंट थिंक, लाइक आई डोंट रिमेम्बर रिसेंटली दे आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्लोज टेस्ट. इनफैक्ट लास्ट ईयर तो यार अपना ना पैराजम्बल भी नहीं आया था, ठीक है. तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर उन्होंने पूरा का पूरा फोकस आपका ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, ठीक है, और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पे, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे. बट यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यार मोर और लेस सबको आता ही है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट समथिंग दैट इज अ मेक और ब्रेक, लाइक एवरीवन नोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? any sensible student who has written cat knows how to solve a reading comprehension. अभी 8 महीने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो कर रहे थे, ठीक है. अभी 7-8 months में जो मैंने पढ़ाया, मैंने 50% 60% तो आरसी पढ़ाया है, ठीक है. सो आई नो दैट पीपल आर लाइक आर लाइक गुड. Okay, if any student who has given cat, okay, they are already masters of reading comprehension. That's not the problem, right? Yes, Vibhor, there are a lot of sessions on roots. Okay, in fact, there are 3 sessions on roots. Okay, you can always go and search my name on the app. If you are on my WhatsApp group, okay, I would put up the link. ठीक है, वहाँ पे मेरे sessions हैं. So I have explained the root method. Okay, I think 4-5 hours के sessions हैं, so you can go through those words. ठीक है. Then there is this one session on high frequency words, 250 words का session है. ठीक है. So मुझे लगता है कि उससे काफी फायदा होगा आपको, है ना? ठीक है. चलो guys, start करते हैं questions, and the idea is that okay, I will keep on asking questions. जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं तुम बताते जाना, ठीक है, एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, ओके, एंड वी विल कवर अराउंड लाइक गुड एनफ क्वेश्चंस, ओके, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एक्चुअल एग्जाम आल्सो. सम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस, एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आर एग्जाम लाइक, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. बाकी जो तुम्हारे क्वेश्चंस हो तुम पूछते रहना. Okay, so the very first word that I've taken is the word abnegation. So quickly guys, 30 seconds जल्दी से बताओ इस word का क्या meaning होगा. Okay, like 4 options are already given. Okay, the options are sacrifice, renunciation, praise, and indulge. Okay, so can you tell me what is the meaning of this word, abnegation? Okay, I'm looking at the answers. Abnegation, भैया बहुत easy word है, normal word है, not a tough one, I believe. Quickly tell me, what is the meaning of the word abnegation? Okay, B option. Okay, so B option. Okay, Rajat says B option. Guys, anyone else who can tell me what is the meaning? Okay, some more answers. Okay, Lakshita says A option होना चाहिए. Rajat says B option होना चाहिए. Okay. Okay, last 10 seconds and then I take it for discussion. Okay, is this a tough word for you? देखो एक बार. Whatever you can click from this. Okay, Apur says it should be A option.
So guys, now let me explain this word. Okay, now renounce, or for that matter, abnegation is a high frequency word. Okay, it's a high frequency word. Yes, Puneet, correct answer. Sarthak, Jalani, correct answer. Sarthak, Puneet, Apurv, Lakshita, Rajat. Okay, correct answers. So guys, let me explain this word. See, okay, देखो. Now when you look at the word abnegation, now abnegation essentially means to leave. Okay, abnegation is basically a word that means to leave, abdicate. Now there are a lot of words that can be associated with this idea. ठीक है, now I'm just writing some of the associated words. अब देखो यहाँ पे कुछ words हैं, ठीक है, they are similar words. You have abdicate. Okay, obviously abdicate is one word that is associated with the idea of leaving. To renounce. Okay, renounce is a verb, renunciation is a noun. ठीक है, so renounce. Okay, renounce you have. Okay, then you have abandon. Now guys, you have to understand that these are synonyms. ठीक है, synonyms का meaning होता है they are similar words, they are not exactly equal to each other, but then they are very very similar. Okay, okay, then you have the word resign. Okay, so abnegation is basically the idea of giving up or leaving. ठीक है, for example, if I say that a person is self abnegating, ठीक है, so self abnegating का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of the word self abnegation? Self abnegation is someone, when someone practices self abnegation, that means he has given himself up. That means he's a sort of person who does not indulge in a lot of those materialistic pleasures. Okay, like someone like who's following austerity. अब यहाँ पे abandon word है, ठीक है. Now abandon is a word that I can use with physical sense and non-physical sense both. For example, I can say I've abandoned the house. I can also say I've abandoned my principles. Okay, renounce is mostly used with non-physical sense. Okay, for example, to renounce your faith. So renounce means to leave. Okay, so like let's say there's a person who has left his faith and he has converted his religion. He would say that I've renounced my previous faith. Okay, uh, abdicate is obviously to leave. Okay, when you abdicate something, that means you leave it or you give up on it. For example, I've abdicated my responsibility towards my, let's say, towards my friends, towards my parents. Okay, Americans normally abdicate their responsibility towards their parents, and then they send them to old age homes. So abdicate, renounce, abandon, resign, self abnegation. Okay, all these words are synonyms, and obviously the answer is going to be बी ऑप्शन. पुनीत एलिनेट नहीं होगा क्योंकि एलिनेट का देखो फंडा जो है ना वो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है. What is alienate? Okay, alienate is basically something like banish. Okay, so when someone gets alienated, that means he is not a part of group. He's either thrown out by his own intention or he leaves because he does not want to be a part of that group. So when I use the word like banish, okay, like for example, Edward Snowden was banished from America because he was accused of leaking a lot of sensitive information. Okay, so that is what alienate is. To alienate someone is to disassociate him from that group and to throw him out. Okay, so when a person is alienated, that means उसका जो social circle है या उसका जो country है या उसका जो आप कह सकते हो उसके जो close ones हैं, they have literally thrown him out. Okay, or have banished him. Okay, तो alienate का थोड़ा सा वैसा connotation, थोड़ा सा वैसा meaning आता है. ठीक है. Okay, Rajat, abnegation is neither positive nor negative. Abnegation is like to leave, right? So when you abnegate, it is basically giving up. Renounce is giving up. Okay. Yes, I can use it in negative situations as well. There's no doubt about it. Okay. Okay. Second question पे आते हैं. The word is petulant. Which of the following is opposite in meaning to the given word petulant? Okay. Now, petulant is a negative word. I think some of you might recognize this. My question is कि यहाँ पे 4 options हैं. Out of these 4 options, which option is the antonym for this word? ठीक है. वैसे easy question है. It's an easy one. Okay, this is I believe an actual question. It's an actual question of Snap. So जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि इतना टफ ये है नहीं. ठीक है. Okay, I've got 2 answers. सार्थक says C option होना चाहिए. पुनीत says C option होना चाहिए. Okay, good enough. Okay. Okay, Rajat says C option, Vibhor says C option, Soumya says C option. Okay, Sarthak, Puneet, Rajat, Vibhor and Soumya, all of you are absolutely correct. Okay, the answer is option C. Okay, Lokendra Rathod says C option hoga. Okay, C option is the absolutely correct answer. So guys, let me explain this.
See, petulant is basically a person who is cantankerous, a person who becomes angry, or person who becomes irritated very easily. Okay, so you can use words like irritable, peevish, petulant, cantankerous. Okay, now most popular word that you have on English, okay, that's a synonymous cantankerous. Okay, he's a cantankerous person. Okay, cantankerous. Okay, and peevish, petulant. Okay, so यहाँ पे you have this word and sorry, आपको अपोजिट पूछा था ना, एंटोनिम एमिएबल, सॉरी. ओके, अच्छा, यहाँ पे बाकी जो वर्ड्स हैं, बेड टेम्पर्ड, impatient, peevish, they're all synonyms. Okay, so obviously I can say a person who has a tendency to become irritated very easily. Okay, that is peevish. And bad tempered, no doubts about it, bad tempered भी हो सकता है. ठीक है, cantankerous is there, right? Peevish, bad tempered. And the opposite would be amiable. Amiable is someone who is friendly. So the answer is going to be option C. And I believe almost all of you have answered this question correctly. Okay, so the answer is option C. Okay, Abu says the option. Rashi, correct answer. Lokendra, correct answer. Okay, chalo. So now we come on to a very interesting question. Let's see how many of you answered this one. Okay, so the first two were like pretty basic. So this is one question, and what you have to do is you have to find the error. Okay, I appreciated him helping the poor people of society as they are mostly neglected. I appreciate him helping the poor people of society as they are mostly neglected. Okay, so what do you think is the answer to this question? Is it no error or ABC? क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? Okay, Lakshita says B option, right? Okay, guys, 30 seconds quickly. Tell me the answer. Lakshita says B option. हाँ जी, क्या होना चाहिए? Anyone, like you can just guess it. What do you think is the problematic portion of the sentence? Okay, Soumya Goel says D option होना चाहिए. That means the sentence has no error. Okay, Puneet says B option. Lokendra says A option. Rajat says B option. Rashi says B option. Okay, Rashi says B option. Okay, good, 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 good. Okay, so now let me tell you how many of you have given the correct answer. Rashi, correct answer. Puneet, correct answer. Lakshita, correct answer. Okay, so I can see, and Rajat, obviously correct answer. So I can see 4 people have given the correct answer. Sarthak, the answer is B option. ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये actually B क्यों होगा. Now see guys, if you see this word helping, okay, look at this. I appreciate him helping the poor people of society as they are mostly neglected, and this is what the sentence is. Now this is basically a gerund. Now what is a gerund? Okay, so a gerund is basically a verb plus ing form that essentially acts as a noun. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ. ठीक है, आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है. इफ यू डोंट नो दिस कंसेप्ट, okay, and you are confused, you can always ask me. So guys, what happens that most of us believe that verb plus ing is always a continuous tense का verb. ठीक है, तो हमारे को ये assumption रहता है कि continuous tense का verb होता है v1 plus ing. तो अगर कहीं पे v1 plus ing आया है तो इसका मतलब it's a continuous tense का verb. Now you have to understand this, that when v1 plus ing acts as a verb, it always comes with a helping verb, right? अगर मैं आपको v1 plus ing दूंगा और वो आपका verb है, it will always come with a helping verb, because you cannot write continuous tense without using a helping verb, and helping verb is compulsory, right? Helping verb is compulsory. Now one more role of v1 plus ing is to act as a what we say present participle when it modifies a certain noun. ठीक है, for example if I say helping hands, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, helping hands मैंने लिखा. So in this case what is happening, helping is actually acting like an adjective and it's modifying the noun hands. ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक नाउन है, नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, और वो आपका एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. बट मोस्टली व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड बिकॉज वी बिलीव दैट v1 प्लस ing इज अ वर्ब. ठीक है, तो वो कंफ्यूजन मैंने अभी हटा दिया. ठीक है, v1 plus ing is not always a verb. v1 plus ing is continuous tense का verb only when it is preceded by the helping verb.
Now the helping verb comes in your continuous tense. It also comes in your perfect continuous tense. ठीक है, perfect continuous tense में आपका has have helping verb रहता है. ठीक है, in a normal continuous tense you have is am are as the helping verb. Now if it's not the verb, if it's not the adjective, then what is this? ठीक है, this is basically a gerund, and a gerund is v1 plus ing acting as a noun. Okay, a gerund is a v1 plus ing acting as a noun. ठीक है, so guys, if this is a noun, if helping is technically a noun, if helping is technically a noun, what can modify a noun? Okay, now those of you who know this must have known that a noun can only be modified by a noun modifier. Okay, this is basically a determiner. तो टेक्निकली होता क्या है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो या तो आपके आर्टिकल्स होते हैं या फिर एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजेसिव केस के. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे को पॉजेसिव केस यूज करना पड़ेगा बिकॉज इफ हेल्पिंग वर्ब इज, इफ हेल्पिंग दिस वर्ड इज अ नाउन. ओके, अ नाउन कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय डिटर्मिनर. अब डिटर्मिनर यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा पॉजेसिव केस का बिकॉज हिम इज टेक्निकली एन ऑब्जेक्ट केस का प्रोनाउन. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पॉजेसिव केस डालना पड़ेगा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई अप्रिशिएट हिज हेल्पिंग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी. I appreciate his helping the poor people of the society. Okay, so the crux of the discussion is this, that when you see v1 plus ing used in a sentence, when you see v1 plus ing used in a sentence and obviously it's not coming with the helping verb, then it's a gerund. If it's a gerund, then a gerund has to be modified by a possessive case का determiner because him in this case is not possessive case, तो मुझे उसको possessive case में change करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो पॉजेसिव केस का जो फंडा है ना, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन का भी बन सकता है एंड इट कैन आल्सो बी नाउन का पॉजेसिव केस. आई विल टेल यू लाइक अ सिनेरियो वेयर यू विल हैव अ जेरेंड एंड बिफोर द जेरेंड यू हैव अ पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन. ठीक है, बेसिकली वो क्वेश्चन भी हम अभी देखेंगे, बट इस क्वेश्चन में आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट यू कैनॉट राइट एन ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन बिफोर द जेरेंड. यू हैव टू राइट possessive case का determiner. ठीक है, so his is basically a possessive case का determiner, so you have to convert it into possessive case, so the possessive case becomes his. ठीक है, ओके, और ऐसा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा मी. ठीक है, आई डोंट लाइक हिम, मी आई डोंट लाइक मी हेल्पिंग हिम फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट मी इनटू पॉजेसिव केस. यू कैन से माय हेल्पिंग हिम. ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, तो पॉजेसिव केस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज मेक, राइट. अभी हिम का मुझे पॉजेसिव केस निकालना है तो उसका हिज हो जाएगा. मुझे आई का पॉजेसिव केस निकालना है तो माय हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज सी एंड यू कैन प्लेस अ पॉजेसिव केस बिफोर अ जेरेंड. Okay, so this is one question. I think a lot of you have answered this, but then this is the logic. Okay, the answer is obviously B option. Okay, now coming to the second question, guys, this is again the same funda. Okay, I hope now a lot of you will pick up this whole funda. Okay, and tell me what should be the answer. तो एक बार आप guess करो, उसके बाद फिर I will tell you the answer. And if you have understood the previous वाला question, you will answer this very quickly. Okay, so guys, 30 seconds. Quickly tell me the answer. He was really annoyed at Rahul dancing with his daughter at the party. Okay, he was really annoyed at Rahul dancing with his daughter at the party. Okay, so guys, quickly tell me what should be the answer here. What is wrong in this sentence? यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो, हाँ ठीक है. ओके, सुनीति सेज बी ऑप्शन. ओके गाइस, quickly anyone? Okay, Lakshita says C option. Okay, Lakshita, why do you think C option होना चाहिए? Rashi says B option. Okay, good Rashi. Okay, Sunita, Rashi, Suniti, Rashi. Okay, Harshita says B option. Okay, Apur says can we use for? Okay, for से क्या होगा? For से कुछ नहीं होगा. ठीक है, Soumya Goel says B option. Okay, so guys, if you have followed the previous question, okay, very easy. See, again, dancing is a gerund here for the reasons I discussed earlier. ठीक है, this is the gerund because again you can see there's no helping verb in here. If there is no helping verb, this cannot be a verb. If it's not a verb, then it's a noun. If it's a noun, then a noun has to be modified by a noun modifier. A noun modifier is basically your adjective or article. It can also be a possessive case. तो अभी obviously यहाँ पे कोई article तो है नहीं जो noun को modify करूँ. ठीक है, यहाँ पे कोई आपका कोई और determiner भी मुझे नहीं दिख रहा, कोई adjective भी नहीं है. So मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to use a possessive case here because possessive cases can modify noun because possessive case act as a determiner to the noun. तो यहाँ पे ये जो राहुल लिखा है ना मैंने, which is technically a noun, I have to convert it into possessive case. ठीक है,
तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। मुझे जेरंट से जस्ट पहले अगर प्रोनाउन मिलता है तो प्रोनाउन को पॉजेसिव केस करना है, मुझे नाउन मिलता है तो नाउन को पॉजेसिव केस करना है, बिकॉज टेक्निकली बोथ आर डिटर्मिनर्स एंड डिटर्मिनर्स कैन मॉडिफाई नाउन्स, एंड दिस आईएनजी वाला फॉर्म इज a gerund which is basically a noun only, ठीक है। तो noun has to be modified by a noun modifier. Now noun modifier क्या होगा, possessive case होगा, ठीक है। अभी वो possessive case में यूज करूंगा तो it will act as a determiner and it will modify the noun, right, ठीक है। so सिद्धि आई थिंक ये समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। ए ऑप्शन भी कई लोग मार्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। so what I've done is that if you have an ing form and the ing form is not preceded by is am are or any helping verb, okay, then use a possessive case before it, right. So you can see that I've used Rahul's dancing. So this becomes the answer. He was really annoyed at Rahul's dancing with his daughter at the party. Okay, he was really annoyed at Rahul's dancing with his daughter at the party. Okay, I think guys you got the logic. You got the reason why it should be possessive case just before the ing form. Okay. So let's move on to the next question. Okay, so this is an easy question. I've taken it in one of the sessions before. Okay, let's see how many of you remember the answer, or like how many of you can answer this question. The question is British kept the prisoners in irons, and D option says no error. Quickly tell me what is the answer to this question, and let me tell you the topic also. The topic is nouns. The topic is nouns. Very basic question. Okay, let's see who can answer this one. British kept the prisoners in irons. D option says no error. Okay. And to help you out, I've also told you that this is a nouns ka question. Okay, the topic of the question is nouns. अभी उतना हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। अभी तुम लोग गेस करो कि आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग माय सेशंस, उन्होंने क्वेश्चन देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देन ऑब्वियसली यू आंसर। ओके, सो लेट्स सी। सौम्या सेज सी ऑप्शन, हर्षिता सेज ए ऑप्शन होना चाहिए। Okay, Siddhigar says A option. Okay, Suniti Bajpayee says A option. Puneet says A option, and Lakshita says B option. Okay, so that means, okay, like I can recognize some of these people. Okay, they have already taken that session, so I know that they know the answer, right? Okay, so Puneet ka correct answer है, Suniti is correct answer, Siddhi is correct answer, Harshita is correct answer. Okay, Lakshita, I think that you have like missed that articles wala session that I took. Okay, so Vibor is also correct answer, and Rashika is also correct answer. Okay, so guys, this is the thing. When you look at this term British is technically an adjective. अभी मुझे एक चीज बताओ, सेंटेंस में कैन एडजेक्टिव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? एब्सोल्युटली नॉट. व्हेन यू नीड अ सब्जेक्ट, ओके, you need to convert the adjective into a noun, because when you look at a sentence का subject can only be a noun or a pronoun, ठीक है। अभी जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट क्यों है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो kept है वो मेन वर्ब है, ठीक है। ओके, kept is the main verb. ओके, kept what and who, ठीक है। आपका यहाँ पे मेरे पास जो kept से जस्ट पहले जो एंटिटी है ब्रिटिश, दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बट द प्रॉब्लम इज दैट ब्रिटिश जो है दैट इज एन एडजेक्टिव. नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट एन एडजेक्टिव टू अ नाउन? वेरी सिंपल, यू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर इट, ठीक है। सो द मोमेंट यू से द ब्रिटिश, ओके, द ब्रिटिश एक्चुअली इंप्लाइज ब्रिटिश पीपल, ठीक है। Okay, now British people is obviously a noun. So what is the technique of converting an adjective to a noun? You just use definite article before it, and then as you use the definite article before the adjective, okay, it acts as a noun, or it starts acting as a noun. Okay, so the British is the noun form, and the answer would be A option. The answer should be the British kept the prisoners in irons. Okay, the British kept the prisoners in irons. Now those of you are thinking कि irons answer होना चाहिए. Let me tell you this. Irons basically means shackles. You can also say fetters. ठीक है, fetters और shackles. हिंदी में जिसको हम लोग जंजीर कहते हैं, ठीक है। So when you keep someone in irons, okay, it essentially means that you're keeping him in fetters, right? Fetters, irons, shackles, they're all synonyms. Fetters, irons, uh, fetters, irons, shackles, they're all synonyms. Okay, so there's nothing wrong in this C wala option. Okay, because some people have replied C option as well, right? Okay, the answer should be the British, because the British is going to be the noun form. Absolutely, Vibor, Britishers भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। If I convert British to Britishers, that it will also be correct, because technically Britishers is also a noun, ठीक है। So आप Britishers लिख दो तो भी सही है,
द ब्रिटिश लिख दो तो भी सही है, ठीक है, बिकॉज द ब्रिटिश इज एक्चुअली ब्रिटिशर्स ओनली, राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। तो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन ग्रामर यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। Okay, so guys, coming to the next question. I have read all the poetries of Keats. Okay, quickly tell me what should be the answer. I think it should take you 10-20 seconds to answer. Okay, a very easy question. I have read all the poetries of Keats. Quickly, what is wrong in this sentence? Or is it no error? Okay, guys, is this sentence correct? Can I say I have read all the poetries of Keats? सही है क्या? Right. Okay, Soumya, correct answer. Siddhi, just look at the sentence. You marked no error. Just see if you find some sort of error in this. Okay, Puneet says D option. Puneet, D option होगा क्या? देखो एक बार. Okay, Apu says B option. Vibhor says D option. Okay, so guys, I think some of you are confused in this. So let me tell you this. Okay, so Apurv has answered the question correctly. Soumya Goel has answered the question correctly. So the answer is this option B. Now you have to understand this. Poetry is technically uncountable. Now, if you know this, you have to understand one thing, that material nouns and abstract nouns are uncountable. Abstract nouns होते हैं intangibles जो होते हैं, और आपके जो material nouns होते हैं ना, जो raw materials होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, आपका प्लास्टिक, वुड, जितने भी आपके metals हैं, they're all uncountable. So guys, when I say these are things are uncountable, that means you cannot pluralize them. So you have to understand that poetry is just like prose. It's a style of writing. It's a style of literature. Now, because it's a style of literature, okay, it's a style of literature, it's intangible, and it's intangible as well as it is abstract. Now, because it is abstract, now it is uncountable or uncountable, so obviously you cannot make plural of that. Now, the question comes that if poetry is uncountable, then what can be pluralized? You can always say poems. अभी देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. देखो, poems is plural because poem is the actual text, the stanza and all that. The actual text is called as poem. अभी उस actual text का plural आप बना सकते हो. You can always say poems. But then poetry is just the style. Poetry is just the style. Guys, you have to understand this. Prose is a style of writing. It's a style of literature. Poetry is a style of literature. Okay, it's an abstract noun. Abstract nouns can neither be used with indefinite articles nor can they be pluralized. So when you have when you have an abstract noun, it is uncountable. So poetry is uncountable, and because poetry is uncountable, the answer is option B, because you can clear. So this is a nouns ka question, and just have a look and tell me what is or what could be wrong in this question. Okay, guys, have a look. Okay, shall we discuss? Okay, let's see. Okay, so I can see that. Okay, I can see that Vaibhav has answered B option. Lakshita says B option. Siddhi says B option. Okay, Rajat says C option. Okay, Rajat says C option. Okay, so one person has obviously given the correct answer. Rajat, the answer is correct. Okay, the answer is option C. Now let me tell you why C option. Lokendra says B option. Okay, Lokendra says B option. So let me tell you why the answer is option C. Let me tell you this. देखो, if you look at this word brick, okay, now brick is one of those words that can actually act as a material noun and also act as a common noun. तो यार ये बड़ा एक confusing case है, ठीक है, because if I use the word brick can act as a material noun and it can act as a common noun. Now some of you will ask me that how does it really matter if it acts as a material noun or a common noun? Because guys, this is the thing. When it acts as a material noun, you cannot make plural of that, because technically speaking material nouns cannot be pluralized. When it acts as a common noun, you can make a plural of that, because technically speaking any singular countable noun can be made plural. तो भाई यहाँ पे फंडा ये है कि तुम्हें ये पता चलना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है
in that sentence, is it acting as a material noun? Because if it's acting as a material noun, you cannot pluralize it. Or it's acting as a common noun, because once you identify it as a common noun, then you can make plural of that. अभी यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, and this will help you understand the concept. Look at this one more sentence. If I say bricks are lying on the road, ठीक है, bricks are lying on the road. Very simple, bricks are lying on the road. Now in this sentence, as you can see, that bricks is not a component of any bigger structure. Okay, it's just referring to a singular countable entity and multiple singular countable entities that are lying on the road. ठीक है, सो अभी सेकेंड एग्जाम्पल को देखो. सेकेंड एग्जाम्पल में आपने ब्रिक्स को कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज नहीं किया. सो दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, यू अग्री विद मी ऑन दैट? ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई ये कॉमन नाउन है. बट फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसमें देखो, यू हैव दिस बिगर स्ट्रक्चर, दिस हाउस, एंड दिस हाउस का रॉ मटेरियल इज ब्रिक. सो इन दिस केस इट इज नॉट अ सेपरेट डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट एंटिटी. ठीक है, क्योंकि अगर सेपरेट डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट एंटिटी होता देन इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज अ कॉमन नाउन. ओके, अभी ये कॉमन नाउन नहीं है, अभी यहाँ पे मटेरियल नाउन है. Once it is proven to be a material noun because it's a part of a bigger structure and it's acting as a material, now you cannot make a plural of that. Why? Because technically speaking, material nouns cannot be made plural and abstract nouns also cannot be made plural. So guys, यहाँ पे आंसर हो गया C option. And one of the things that you need to understand, singulars and plurals के questions वही बहुत ज़्यादा important है, ठीक है? And if you have been following my sessions, I would always emphasize on this concept कि singular और plural का फंडा देखो, ठीक है? Common nouns can be pluralized. Abstract and material nouns cannot be pluralized. Okay, so whenever you identify that a certain noun is acting as a common noun or a material noun, you have to understand that you cannot make a plural of that. ठीक है, so I think ये concept अभी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, because this is one of those concepts, okay, that confuse a lot of people. The answer is in this case going to be C option. Okay, and I hope you have understood the logic. Right, और लॉजिक नहीं समझ में आए तो यू कैन ऑलवेज सेंड इट इन द मैसेज. ओके, आई एम लुकिंग एट द चैट. ओके, सो आई विल ऑलवेज बी हियर टू आंसर योर क्वेरीज. ठीक है, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. I, he and you must help that poor man. I, he and you must help that poor man. Okay, so have a look at this question and tell me if this question like if there's an error or is it correct. और बहुत बेसिक कंसेप्ट पे गाइस मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मत सोचना तुम कि मैं कोई हाई फंडू कंसेप्ट्स पे ले रहा हूँ. आई एम जस्ट पिकिंग अप व्हाट आई हैव डन फॉर दिस स्लाइड. ओके, लेट मी टेल यू दिस. I have taken all the basic concepts of nouns, pronouns, adjectives, tenses, conditionals, ठीक है, और सबको कंबाइन करके ना मैंने सब पे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस डाल दिए. ठीक है, सो आई हैव picked up the most basic concepts, most basic, like these are not the tough ones, right? Okay, and it will help you refresh all the topics. तो जल्दी से यार देखो, इसके अंदर कुछ गैस वेस कर लो, नहीं भी आता तो भी कुछ गैस वेस कर लो यार. ठीक है, जस्ट टेक अ गेस ऑन दिस, और इफ यू नो द आंसर यू कैन ऑलवेज टेल मी द आंसर. If you don't know the answer, then you can just take a wild guess and let's see if it turns out to right. It turns out right. Okay, so guys, tell me what should be the answer. I'm looking at the replies. Okay. So let me see. Apur says A option. Suniti says D option. Harshita says A option. Siddhi says A option. So Puneet says A option. Soumya says A option. Vineet says A option. Okay, Vaibhav says A option. Okay, so I think guys you know this question. I think all of you, almost all of you have got this question correct. Okay, so basically what you see here, I, he and you. Okay, so they are all pronouns. Pronouns are subject case, right? So they are all pronouns and pronouns of subject case. ठीक है, subject case का मतलब they act as subject in the sentence. Okay, all these pronouns they act as subject in the sentence. Now when you have pronouns of first person, second person and third person, ठीक है, अब किसी को नहीं पता first person, second person, third person क्या होता है, so let me tell you जल्दी से क्या होता है. First person, second person और third person. First person refers to I and we. Second person refers to you. Okay, he. Third person refers to he, she, it, they. ठीक है, now all the nouns are also counted as a part of third person only. If you have a noun in a sentence, आप उस noun को भी third person ही मानोगे. Singular noun है तो भी third person होगा, plural noun है तो भी third person होगा.
ठीक है. So now guys you have to understand this, ठीक है. If you don't know this concept, now I can see a lot of you have answered this question, so I believe that you know the concept. अगर नहीं पता था तो मैं बता रहा हूँ. Anyone who is looking at this concept for the first time, just understand this, that when you have these three people, these three persons, first person, second person, third person, in the same sentence acting as the subject, okay, acting as a subject, you have to arrange them in the sequence of 2 3 1. 2 3 1, that means second person comes pehle, followed by the third person, followed by the first person. 2 3 1. So the answer should be you, he and I. Okay, so guys, I think you have understood this concept. When you have all three persons in the same sentence acting as the subject, you have to arrange them in the order of 2 3 1. That means second person followed by third person followed by the first person. Okay, so the answer should be you, he and I. So obviously answer is A option. अब यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर लो. When you have a sentence that talks about confession or any situation where you accept your fault, in that case your sequence should be 1 2 3. So this is guys an exception. ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, सेंटेंस को देख लेना. मोस्टली द क्वेश्चन दैट कम इन द एग्जाम्स, okay, will ask you a normal situation, that means 2 3 1 का sequence. 90-95% of the times the question would be very basic, because I believe that snap क्योंकि बहुत easy exam है, बहुत ज़्यादा easy exam है, ठीक है. So I don't think that they would ask you the exception वाला thing, ठीक है. But then there happens to be this one exception in this concept, and that is when you talk about accepting a blame or making a confession, ठीक है. So उस केस के अंदर you have to arrange it in 1 2 3 का sequence. 1 2 3 means first person, second person and third person. Okay, so this is the sequence. I hope you got the answer, you understood the logic and you got the concept as well, right? So guys, this is a concept of pronouns, and I hope some of you might not know this concept, तो उनको अभी पता चल गया. ठीक है, चलो next question देखते हैं. Let's have a look at the next question. Okay, so guys, again a very important concept in this question, a very basic concept but a very important one. Okay, so let's see how many of you can answer this question. Answer आता है तो बता देना, नहीं भी आता तो भी guess मार लो. ठीक है, just take a guess. Just take a wild guess, random guess, and by the time you're done with the session, you would know exactly how many guesses you can get right. ठीक है, so उससे तुम्हें उस चीज का भी एक आइडिया लग जाएगा कि जनरली तुम्हारे कितने गेस सही जाते हैं. ठीक है, क्योंकि गेस वर्क भी अच्छा है तो भी दैट इज समथिंग दैट्स रियली गुड. ओके, लाइक सम पीपल से दैट कि सब ग्रामर तो नहीं आती लेकिन गेस से हम सही कर लेते हैं, तो गेस भी यार अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्या दिक्कत है. ओके, सो आई हैव गॉट वन आंसर. विनीत सेज डी ऑप्शन होना चाहिए. ओके, विनीत डी ऑप्शन. Apur says D option. Okay, so guys, two people have already replied. Like both of them are saying D option. Quickly. Next 20 seconds. Okay, quickly. Okay, Suniti Bajpayee says it should be B option. Okay. Okay, Rashi Khandelwal says it should be B option. Okay, Rashi, I think you have attended that session of mine on nouns, na? Okay, so you should have some idea as to how to solve this question. Okay, Divan Rai says B option. Okay. Siddhi Garg says A option. Lokendra says D option. Soumya says D option. Okay. So guys, let me tell you how many of you have answered correctly. I think only 1 or 2 people have answered this question correctly. Okay, though the concept is very basic, but I think most of you have not seen this concept of grammar. Okay, so Siddhi has answered the question correctly. Lakshita has answered the question correctly. Okay, so now let me tell you this. Okay, Vaibhav, D option नहीं होगा भाई, A option होगा. ठीक है, and let me explain why A option. Okay, so guys, this is a very important concept of grammar, okay, of nouns actually. So this is what happens when you have a collective noun. We all know that collective nouns are singular entities otherwise. Okay, so when you use a collective noun, you always use it with singular verb, because we all know that collective nouns generally are singular and they take a singular verb. ठीक है, so collective noun अभी हमारे पास कौन कौन से रहते हैं. ठीक है, so have nouns like army, jury, committee, commission, orchestra, etc, team वगैरह. ठीक है, so now we all know that in a normal scenario collective noun is singular, right? But when you have something called as difference of opinion or difference of purpose, difference of opinion or difference of purpose. ठीक है, अभी कोई ये सोच रहा है कि डिफरेंस ऑफ पर्पस का मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या हुआ. सो व्हेन यू लुक एट सच टर्म्स, नॉट यूनानिमस. Okay, not unanimous, guys, just look at this. Not unanimous means that the people within the group are not agreeing on a certain thing. Okay, they are not together as a single unit. Similarly, you have such hints like divided. The orchestra is /are divided. The government is /are divided. Okay,
Then you can have a sentence like this. You can say the army is slash are going to their homes. Okay, look at this sentence. Now you have a difference of purpose, because obviously now the army is not having a singular purpose. Now they are going to the respective homes. Okay, so when you have difference of opinion or difference of purpose, when you have difference of opinion or difference of purpose, how do we spot that? Okay, look at such words: divided, not unanimous. Then the same collective noun becomes a divided unit, and because it's a divided unit, now you cannot use it with singular verb. Now you have to in fact use the plural verb. ठीक है, so यहाँ पे जो main verb है इसकी जगह वो are हो जाएगा, and the reason is that committee is now a divided unit, because obviously like it's not unanimous, and because it's not unanimous, it's a divided unit. Now the answer is going to be A option. The committee are not unanimous on this issue. So this is the answer, guys. The committee are not unanimous on this issue. Okay, and the reason is that the collective noun is divided. Once you prove that the collective noun is divided in purpose or opinion, purpose या opinion के अंदर आपका noun divided है, collective noun divided है, then it acts as a plural entity. Now it's no longer a singular unit. The answer is going to be option A. Okay, moving on to the next question. Have a look. You have to tell me the synonym. Okay, you have to tell me the synonym. What do you think? What should be the answer? Okay, so let's see. Apurv says D option होना चाहिए. Apurv says D option. Okay, Weber says D option. Okay, guys, almost all of you are replying the option D. ऐसा क्या हो गया D option के अंदर? Like, let me just check. मैं सही तो पढ़ रहा हूँ. Okay, yes. Apurv says D option. Suniti says D option. Puneet says D option. Lakshita says D option. Siddhi says B option. Okay, Siddhi says B option. Vibhor says C option. यार ये वर्ड तो काफी बार शायद अपन ने डिस्कस किया होगा. ठीक है, हाँ, राशि सेज ए ऑप्शन होना चाहिए. Like guys, how many of you have actually gone through that session of mine where I have discussed 250 words in that one single session? Okay, अगर नहीं देखा तो एक बार ऐप पे देखना. ठीक है, उसमें मैंने ये वर्ड लिया है. ठीक है, so now let me explain. This is a high frequency word. This is a high frequency word. You have words that means someone who is talkative, and then you have words for people who speak very little. ठीक है, so you have words for people who speak a lot. Okay, so कुछ words देखें. Let's see. So you have obviously this word loquacious. Loquacious means a person who talks a lot. ठीक है, then you have verbose, you have garrulous. You also have this word vociferous, but vociferous is like more like talkative plus loud. So you have this additional meaning of being loud as well. Loud. Okay. And then on the other end of the spectrum, you have people who speak very little. So you have people who are laconic. Okay, so laconic people are mostly people who speak in a manner that is very pithy, that is very succinct. Okay, that is very to the point, or I can say brief. Okay, or you can also say succinct, pithy. Okay, all these words. ठीक है, एक word और होता है. I don't remember right now. ठीक है. So the idea is that when you are a laconic person, you have this unique ability of speaking your mind in as little words, as few words as possible. On the other hand, if you are loquacious or verbose or garrulous or vociferous, you have this tendency to indulge in superfluity. Okay, so you end up using a lot of words. So a loquacious person will always use a lot of words, and he will indulge in a lot of superfluity and redundancy. तो यार आप जब ज्यादा बोलते हो तो loquacious होता है, verbose होता है, rambling होता है. अच्छा, rambling का भी देखो फंडा क्या है. What is rambling? What is rambling? Look at this, guys. Look at this. ठीक है, अभी rambling का देखो फंडा क्या है. Rambling is also considered as a synonym of loquacious only, but rambling is a slightly different word, because rambling basically refers to a style of speaking that is lengthy and confused. ठीक है, आप बोले जा रहे हो लेकिन आपकी बातों में ना बहुत ज्यादा लेंथ है. यू आर डायलेटिंग द इशू, यू आर डायलेटिंग द टॉपिक, एंड यू आर कंफ्यूजिंग पीपल. देन आई ऑल्सो यूज दिस वर्ड लॉन्ग वाइंडेड. Very popular word.
ठीक है, जनरली जो लोग टॉकेटिव होते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, दे ऑल्सो टेंड टू बी लॉन्ग वाइंडेड. लॉन्ग वाइंडेड मीन्स यू कीप ऑन स्पीकिंग. लेंदी, confused, long winded, rambling, they are all very similar to loquacious. So guys, loquacious, rambling, verbose, they're all connected. They're all connected. They're all similar, right? Okay. And there is one word that is not a part of this group, very obviously. Okay, so which word is not a part of this group? The option second. Okay, the option second. Okay, कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे इस ग्रुप का पार्ट नहीं है? कंसाइज. ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द सिनोनिम, राइट? तो सिनोनिम जो है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? लैकोनिक का इट वुड बी कंसाइज. ओके, सो गाइस आई हैव रिसीव्ड दिस वन. दिवान सेज क्रिस्प होना चाहिए. यस, या क्रिस्प यू कैन आल्सो से. यस, आई कैन से क्रिस्प. सो पिथी, succinct, brief. Okay, crisp. Okay, yes, I remember that one as well. The word is terse. Terse manner of speaking is also a manner where you use very few words. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बट यहाँ पे laconic is an adjective that we use with people. So for example, let me pick up a person like Manmohan Singh. So what would I say? I would say Manmohan Singh was a laconic person. ठीक है, because laconic is an adjective that I used to modify the name of a person. Like Manmohan Singh is laconic. But the sort of conversation that they indulge in, the sort of statements they make, so statements, conversations, discussions, वो क्या होते हैं? They are modified by using adjectives like pithy, succinct, brief, crisp, concise, terse, terse, terse. ठीक है, so when you use all these words, pithy, succinct, brief, terse, ये सारे के सारे words, ठीक है, basically विभोर पिथी का देखो फंडा क्या है. पिथी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ही गेव मी अ पिथी रिप्लाई. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. ओके, अभी यहाँ पे ना एक क्वेश्चन शायद है ना, अभी आप में से तो खैर कोई नहीं पूछेगा बट मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से. ठीक है, होता क्या है दैट व्हेन यू गिव पिथी रिप्लाईज, व्हेन यू गिव सक्सेंट रिप्लाईज, व्हेन यू गिव टर्स रिप्लाईज, देयर दिस इनहेरेंट नेगेटिव कनोटेशन टू इट. अभी नेगेटिव कनोटेशन देखो पता है कैसे है? बिकॉज you are replying in a manner that might be considered incourteous because you are directly giving the reply without giving any explanation. Now understand it like this. For example, if you fire a person from the job, अभी एक बंदा है उसको अपने जॉब से निकाल दिया. ठीक है, so he would expect some sort of explanation. He would expect a mail explaining the reasons why he was fired from the job. है ना, वो सारे के सारे फंडे उसको लगेगा कि यार मुझे बताओ तो सही भी क्यों निकाल दिया. But then let's assume he gets a direct reply from his boss that you have been fired and no explanation is given. What would I say in that case? I would say it was a terse reply. It was a terse reply. Terse का मतलब ये हुआ that the reply was given in a manner where no explanation was extended. So अभी ना यहाँ पे कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा because vocab में ना dimensions होते हैं. ठीक है, so when you say he gave me a terse reply, तो इसका एक dimension ये भी है that the reply was short, it was to the point and no extra explanation was provided. So some of you might perceive it as blunt. ठीक है, अभी मैं उतने डेप्थ में हर क्वेश्चन में जा नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली यार अपने पास उतना टाइम नहीं है. ठीक है, बट देन आई थिंक यू गॉट दी पॉइंट. सिनोनिम्स आर ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. ठीक है, अभी किसी एग्जाम में तुम्हें ब्लंट दिखेगा, तुम बोलोगे अरे ब्लंट कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, तो ब्लंट का भाई ये फंडा ये है दैट ब्लंट इज अ वर्ड विद नेगेटिव कनोटेशन एंड नॉर्मली व्हेन यू गिव डायरेक्ट रिप्लाईज टू द पॉइंट रिप्लाईज टू पीपल, समटाइम्स इट इज परसीव्ड एज बीइंग इनकर्टियस and because you have not given any explanation, it is a blunt reply. Okay, reply on your face without explanation. Okay, for example, you fire a person, you don't give him any reason for it, it's a blunt it's a blunt statement. It's a terse statement, it's a terse, like, you know, it can be a terse remark. ठीक है, so keep that dimension also in mind. ठीक है, और देखो यार ये जो क्वेश्चंस हैं देखो आप मेरे से पूछोगे क्वेश्चंस तो ही मैं उन डायमेंशंस को पिक करूंगा बिकॉज लाइक आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु एंजॉयज वोकैबुलरी. ठीक है, ग्रामर, बट मैं उतनी डेप्थ में जाता हूँ जितना मुझे लगता है कि लर्नर्स को समझ में आ जाए. ठीक है, नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव बीन एसोसिएटेड विद मी. ठीक है, तो मैं उनको तो खैर सबको जानता हूँ. ठीक है, आई नो दैट कि भाई अपने को एक बेसिक चीज करनी है, बट देन अगेन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज पीपल आल्सो. सो लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क मी एंड लाइक आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. ठीक है, सो मुझे लगता है कि भाई ये समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेट्स मूव ऑन. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ फैंटास्टिक कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल्स. ठीक है, सो कंडीशनल्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है एंड लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ हिंट. ओके, इट्स अ सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन. ओके, दोज ऑफ यू हु हैव लाइक हु आर अ पार्ट ऑफ लाइक माय सेशंस, ठीक है, तो शायद कभी मैंने डिस्कस किया होगा.
This is a concept of conditionals. Tell me what should be the answer. Okay, this is a hint. Okay, quickly tell me what should be the answer. Is it no error, or it should be A option or C option या B option, जो भी है. ठीक है, 30 सेकंड गाइस. क्विकली क्या आंसर होगा भाई? What should be the answer? And I've already given you a hint. This is a concept of conditionals. In this question, I'm using a concept of conditionals. Those of you who know this concept, okay, can answer this question. Even those who don't know this concept can still take a guess. You can just take a wild guess. Okay, just go by the feel of the sentence. Okay, so I can see Webber has said A option, Rashi says A option, Apu says D option, Soumya Goel says A option. Okay, Siddhi Garg says B option, Manas says A option. Okay, okay, good. Okay, so guys, let me tell you the answer. I can see that a lot of you have answered this question correctly. Webber correct answer, Rashi correct answer, Soumya correct answer, Manas correct answer. Okay, so these people have answered this question correctly. Okay, so let me tell you what this whole discussion is all about. Lokendra correct answer. So very simple concept. Just look at this. The answer is, if you had come to me, I would have helped you. Now, guys, this is third conditional. And those of you who don't know what is third conditional, let me explain. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना. When you have a situation of imaginary past, imaginary past का देखो मीनिंग क्या होता है. Imaginary past means कि आप ना किसी पास्ट को इमेजिन करो जो एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार, यार अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं पास हो जाता, यार अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, यार उस टाइम ना इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो ना तो बहुत अच्छा पैसा इसमें मिलता अपने को. ऐसे बोलते हैं ना कई बार हम. ठीक है, लाइक वी जनरली हैव दिस टेंडेंसी टू एक्चुअली मेक स्टेटमेंट्स वेयर वी इमेजिन सर्टेन थिंग इन द पास्ट एंड वी आल्सो इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस थिंग्स, राइट? Okay, I think like all of us do that, right? Okay, so look at this. If I had studied, I would have passed. ठीक है, which literally in Hindi converts as अगर मैंने पढ़ाई की होती, which is imaginary, obviously you never studied, okay, तो मैं पास हो गया होता. Okay, so such situations of imaginary past are categorized in what we call as third conditional. Now in third conditional, what happens? If clause is followed by had plus v3, that is third form of the verb, and the main clause is like the one that is not having if, because if is like subordinating conjunction. तो जो मेन क्लॉज होती है, फिर आप कह लो जो अदर क्लॉज है इफ के अलावा वाली, ठीक है, द मेन क्लॉज इज रिटन इन दिस, ओके, इन दिस फॉर्मेट, would slash could plus have plus v3. Okay, so let me write it like this. If clause had plus v3, मेन क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज मतलब जिसमें इफ नहीं लगा हुआ, जो दूसरी वाली क्लॉज है, ठीक है, दैट इज वुड स्लैश कुड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन प्लस हैव प्लस v3. ठीक है, so you can see that in this sentence also the main clause is written in would plus have plus v3. Okay, so if I had studied, so this is the if clause. We can see if clause is in had plus third form the verb, and the main clause is would plus have plus v3. So past is like v3. ठीक है, third form the verb. ठीक है, so बहुत सिंपल है. You have to just do that, right? ठीक है, विवोर सी ऑप्शन नहीं होगा, दीवान सी ऑप्शन नहीं होगा. आई थिंक गाइस तुम्हें समझ में आ गया, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज अ सेंटेंस ऑफ थर्ड कंडीशनल, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग द पास्ट. यू आर सेइंग दैट अगर तुम मेरे पास आए होते, दैट मीन्स दिस इज अ पास्ट दैट नेवर हैपेंड. This is a past that never happened. So when you talk about past that never happened, the sentence goes in third conditional. In the third conditional, the if clause is had plus v3, had plus v3, and the main clause is would plus have plus v3. Would plus have plus v3. So guys, I hope you have understood this question. Okay, if you haven't, you can always like reply in the chat box. Okay, but I think this question was a concept based question. कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, तो लॉजिक भी काफी क्लियर था. द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. द आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, so guys, let's move on to the next question. Okay, and if you don't understand, you can always ask me in the chat box. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता देखो यार कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. So like I can only like go by my instincts. चलो, next question, let's have a look. Okay, so guys, this is an actual question. This is an actual question of Snap. What you see on the screen is an actual question of Snap. Okay,
इट्स अ कंडीशनल्स का क्वेश्चन. कंडीशनल्स मैंने इसलिए पिक किया बिकॉज कंडीशनल्स के एवरी ईयर यू हैव 2 क्वेश्चंस. गाइस जस्ट गो बाय द पैटर्न. ठीक है. अभी देखो वोकैब का तो क्या है ना कि वोकैब तो इजी है. इजी एज इन कि ऑब्वियसली लाइक इफ यू गेट द वर्ड दैट यू स्टडीड. ओके बट ग्रामर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लॉजिक राइट. सो यू हैव टू जस्ट सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस के पैटर्न ज्यादा आ रहे हैं. सो गाइस आई कैन सी पीपल आर सेइंग. ठीक है. ठीक है. ओके सो ओके विबोर. Vibhor, I am going to teach you the concept of conditionals. Don't worry, the session will be live on the app. ठीक है. So I will be taking a session on the app. ठीक है. So उसका मैं अगर तुम मेरे WhatsApp ग्रुप के अंदर हो ठीक है तो I normally send the links. ठीक है. तो मैं बल्क में सबको लिंक्स भेज देता हूँ जो जो स्टूडेंट्स मेरे WhatsApp ग्रुप पे हैं. ठीक है. बाकी अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन द ऐप ओके यू ऑब्वियसली वुड गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है. सो राशि सेज डी ऑप्शन होगा. उत्कर्ष सेज ए ऑप्शन होगा. सिद्धि सेज डी ऑप्शन. सो गाइस आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस राइट बिकॉज आई कैन सी अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है. डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है ना, सी भी आ गया एक. ठीक है. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन बिकॉज आई थिंक दिस इज वन कंसेप्ट. कंसेप्ट इज वेरी इजी. ठीक है. अभी नहीं समझ में आया तो आप पूछना मेरे से. ठीक है. ओके सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन. Okay, so let me tell you how many of you have replied correctly. Okay, so Rashi correct answer, Lokendra correct answer, Diwan Rai correct answer. Okay, 3 people have answered this question correctly. 3 people have answered this question correctly. Okay, so guys, this is the concept. This is the concept. Have a look at it. And if you don't understand, just ask me. So this is what is happening. If you behaved well, understand this. When do you think a sentence is in conditional? When you have one clause that starts with if and the second clause is present after the comma where you use would, could, will का option यानी कि models use हो रहे हैं. ठीक है. So now if clause has this word behaved, तो behaved word हमने use किया है. ठीक है. और मैंने लिखा है if you behaved well. ठीक है. if you behaved well. So guys this is second form of the verb. Behaved is like second form of the verb. अभी देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का देखो फंडा क्या होता है. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट टेंस. ओके दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. But second form is also used in imaginary situations of the present. That is what we called as past subjunctive. ठीक है. अभी तुम पूछोगे कि सर past subjunctive आपको कैसे पता चला कि imaginary है. तो भैया मुझे ऐसे पता चला क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना if लिखा हुआ है. ठीक है. Okay. So you have second form of the verb in the if clause. If you have second form of the verb in the if clause, it may mean two things. Okay, one is that the sentence can be in simple past tense. Okay, but then if the sentence is in simple past tense, you will never write if. Okay, so abhi second form aa raha hai, if likha hua hai, that means it is imaginary situation of the present. When you use second form of the verb to depict the imaginary situation, you will always use if before the second form. For example, मैं अगर आपसे कहूं if I had money, what does it mean? It simply means अगर मेरे पास money होता. That means I don't actually have money. It's an imagination, right? Okay. So when I look at the sentence, I realize that yes, this is second form of the verb. If is written before the second form of the verb. This is an imaginary sentence. And because this is an imaginary sentence, the main clause should now feature what we call as the model would slash could. ठीक है. उसका reason पता है क्या है? Would has a probability that is lower than that of will. And will cannot be used because will can only be used in those situations where the probability is high. But in this case, the probability is very low because obviously the situation is something that is already imaginary. तो guys ये फंडा है इसका कि यहाँ पे would आएगा. would इसलिए आएगा because would as a model has a probability that is way lower than that of will. Will can only be used when you have high probability of something happening. अभी आप पूछोगे कि सर high probability क्यों नहीं है? तो भैया high probability इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो if वाला clause है, that is basically a subordinate clause, okay, that starts with this conjunction if. The use of if, it makes it imaginary, and now because it is already imaginary because of the use of the second form of the verb which is past subjunctive, the probability of the sentence goes down. So this is what we call as the semi-closed conditional. And if में अगर second form लगा हो तो जो main clause है, ठीक है, उसमें would या could में से choose करना. यहाँ पे choices क्या है? Would respect. Okay, so the answer would be would. ठीक है. And why? Because would has a probability that is way lower than will. ठीक है, तो you can never use will. You have to use would. Would का option नहीं मिलता और तो could का ले लो. ठीक है, because would and could as models have a lower probability than will and can. ठीक है. Will और can जो use होता है ना वो first conditional में होता है when there's a situation which can actually happen.
But this is one of those situations that is already imaginary, so it will never happen. And because it will never happen, I cannot use a model that shows a higher level of probability like will or shall. ठीक है? Okay. और जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको मैं बता देता हूँ, this is basically a sentence of second conditional. This is second conditional, and some books also call it the semi closed. ठीक है? और जिनको इसको शॉर्टकट से याद करना है ना, शॉर्टकट पता है क्या है? इफ क्लॉज में अगर सेकंड फॉर्म लगाओ तो जो मेन क्लॉज होती है ना उसमें वुड या कुड आंसर में आता है. ठीक है? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन. दिस इज द आंसर. ओके. एंड द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस विल बी रूल्ड आउट फॉर ऑब्वियस रीजन. ठीक है? ओके. So guys, I hope you got this question, and this is an actual 2019 का question, I believe 2019 का ही question है. ठीक है? So this is not a question that I have made myself. Okay, this is an actual snap का question. ठीक है? So tenses and conditionals are very important, and there's going to be a session on tenses, तो वो जरूर से लेना आप. Okay, it's going to be on Saturday. Okay. Okay, so guys, I hope you have got the answer. You know how I have to solve the question. ठीक है? So this is uh, one question. I hope समझ में आ गया होगा. Okay, sure. Moving on to the next. Okay. So let me tell you the topic also. This is a question from the chapter verbs. ठीक है? टेंसेस का देखा अभी हमने, कंडीशनल्स का देखा, नाउन्स का भी देखा. ठीक है? नाउ लेट मी पिक अप अ न्यू टॉपिक, वर्ब. Okay, so let's see who can answer this question. Guys, anyone who can answer this question? क्या होना चाहिए भाई? What do you think? What do you think? क्या होगा? और नहीं भी पता तो यार लक बेस मार दो, कुछ तो सही होगा. अब देखो स्नैप में तो अटेम्प्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना, परसेंटाइल चाहिए तो. So let's see. So most people are saying A option. Okay, Vaibhav says A option. Lukendra says A option. Okay, Apu says A option. Utkarsh says A option. Okay, so guys, I believe most of you know the answer. Okay, not even single incorrect reply. Every answer is correct perfectly. Okay, so Soumya correct answer. Apu correct answer. So guys, I think almost all of you have cracked this one. Almost all of you have cracked this one. Almost all of you know the answer. That means दिस इज समथिंग लाइक यू हैव ऑलरेडी डन. तो अब देखो मैं बता देता हूँ उसका कंसेप्ट क्या है. फंडा देखो बहुत सिंपल सा है. व्हेन यू लुक एट दिस वर्ब हैंग, ठीक है, व्हेन यू लुक एट द वर्ब हैंग, ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज द V1, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ इफ यू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है, सो देयर कैन बी टू सेकंड फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ब. वन सेकंड फॉर्म इज द वर्ब हैंग. नाउ हैंग इज यूज्ड ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज हैंग टिल डेथ. ठीक है? सो फांसी देना जैसे हम बोलते हैं ना, हैंग टिल डेथ. Okay, so you use the verb hanged when you kill a person through that like hang till death, and like obviously in this case you are not killing the person, right? Okay, you are not hanging him to death, right? Okay, so in that case what do you do? Okay, you use the second wala like the second form of the verb, and that is hung. So actually this V1 is hang only, but then इसकी दो second form आते हैं. hung का मतलब आप किसी जगह पे ना किसी को suspend करते हो, ठीक है? For example, you hung your clothes yesterday on the like in the closet or something like that. So that is suspended. Okay. Uh, so obviously you're not killing anyone. Okay, you're not killing anyone. Okay, in this case you are just hanging it, just like हिंदी में बोलते हैं ना, किसी चीज को कहीं से आपने लटका दिया, सस्पेंड कर दिया. तो सस्पेंड वाला सेंस होता है ना, ठीक है, वो आपका हंग होता है. सो दिस इज द सेकंड फॉर्म. अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. एंड लाइक ऑब्वियसली अगर सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब होता तो थर्ड फॉर्म की अपन बात करते. दिस इज ओनली अ क्वेश्चन वेयर यू आर लाइक वेयर यू हैव अ सेंटेंस व्हिच इज इन पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, हैंग वर्ब की दो फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, आपको हंग वाली यूज करनी है क्योंकि हैंग वाली हो नहीं सकती. वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब्स. ठीक है, सो गाइस लाइक दिस इज लाइक द पैटर्न आई प्रेफर, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता है. लाइक I just pick up some questions from every topic, and like all the conceptual questions. So I hope Utkarsh, I hope समझ में आ गया अभी तो, है ना? ठीक है उत्कर्ष, I hope तुम्हें अभी समझ में आ गया. चलो, let's have a look at the next one. Okay.
So guys, again I have taken a question from tenses. Okay, let's see who can answer this one. Okay, above there is nothing like hanged up. Okay, it's always hung. So अगर आप suspend कर रहे हो, ठीक है, तो वो hung हो जाएगा. ठीक है. और फ्रेजल वर्ब की यहाँ पे अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, है ना. सो लाइक टू हैंग अप द फोन और लाइक समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, second form of the verb. What is second form of the verb for the verb hang? There can be two second forms, and I've explained already कि कौन सा वाला होगा. ठीक है. So I have got the answer. Apu says A option होना चाहिए. And guys, remember this, that you also have the option of no error. Okay, so remember this. There is also no error ka option. Soumya says B option. Suniti says B option. Okay, if I'm free, I would attend the party. Okay, Suniti says B option. B option. Paneet says B option. Okay, okay, okay. So Soumya B option. Puneet says B option. Lokendra B option. Divan says B option. Vibhor says B option. Rashi Khandelwal says B option. Okay, so guys, I think you have answered the question correctly. Okay, the answer is B option only, and the reason is this. This is a situation of first conditional, a situation that can actually happen. ठीक है, अभी किसी को मैं नहीं पता तो मैं इसका रीजन बता देता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनना. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रीजन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. सी, when you have a sentence, where the if clause is written in V1 or the base form of the verb, ठीक है, जो उसको simple present tense भी बोलते हैं हम, ठीक है, and the main clause uses will or shall. Okay, such sentences are called the sentences of first conditional. अभी first conditional का बड़ा simple concept होता है. These situations are actually possible in reality. These situations are actually possible in reality. So let me give you one example. अगर मैं आपसे कहता हूँ, if I study, I will pass. So absolutely this situation is possible. अगर मैं study करता हूँ, if I study, this is V1, I will pass. Okay, and you can see that I've used will here. ठीक है, will is basically a model that shows high level of probability of something happening, and okay, I can use shall also. ठीक है, depend करता है will और shall, दोनों में से कोई सा भी use कर सकते हो आप. ठीक है, both are correct. Okay, will use कर लो, shall use कर लो in the main clause. Now guys, the thing is this. Now as you can see, I have written if I am free. That means there is a possibility that I may be free. And remember this, though this sentence is written in base form of the verb, that is V1, this is actually talking about future. और ये चीज शायद तुम्हें पता होगी कि हम लोग V1 का यूज ना फ्यूचर की बात करने में भी यूज करते हैं. ठीक है. Okay, for example, if I go to the market. Now, if I go to the market is actually go is like V1 form, but it's referring to something in future. So when you say if I am free, it means that I am basically talking about future, but I am using the verb V1 because V1 can be used to talk about future when I use it with if. Okay, so अगर मैं free होता हूँ तो मैं party attend कर लूंगा. Now this sentence is basically a sentence of first conditional. In first conditional you have if के बाद में V1 form, and when you have that situation, the situation is actually possible. Because the situation is possible, the main clause is always written in will or shall. Okay, so इसको भी wrong कर दो. ठीक है, because would तो आपका second conditional में आता है, यहाँ पे आप will shall use कर लो. ठीक है, you can use will or shall. Okay, so the answer is going to be option B. Right, now those of you who have this question कि सर हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है. if clause को चेक करना. if clause के अंदर अगर आपका SMR कुछ लिखा हुआ है या कोई V1 फॉर्म का verb लिखा है, that means the conditional is first conditional. That means open conditional. open का मतलब this situation is actually possible in future. open, ठीक है, मतलब हो सकता है. अगर मैं free हुआ, हो सकता है. It is possible. It's not an impossibility. So when something is possible, we always write V1 in the if clause. If something is possible, we always use the V1 and like V1 in the if clause. तो अभी V1 if clause में आ गया तो then what you have to check is the main clause. Now you have to go to the main clause. अभी main clause में जाके चेक करना कि would वगैरह तो कुछ नहीं लिखा हुआ, because would और could जो है वो second conditional में जाता है. ठीक है, if the situation is possible, it's an open conditional, then in the main clause use will or shall. Okay, so very simply the answer is going to be option B, and I hope you got the logic. This is an open conditional, and open conditional we use will / shall in the main clause. Okay, so this is how we solve this question, and the answer is going to be option B. Okay, so guys, this is one concept. This is one concept very important. ठीक है, जिनको नहीं आता था, I think this is something that would really add value. Okay, now moving on to the next question.
a slightly modified version of the same question. Okay. Now the question is, if I'm free now, I would attend the party. If I'm free now, I would attend the party. Okay, so I have modified it somewhat, like because I've used this adverb now. Okay, तो अभी मैंने क्या किया है? What I've done is actually I've attached one time indicating verb now. And before you start solving this question, let me give you one important concept of tenses. That is, you can never change the time in a sentence because time decides the verb. Time decides the tense. तो कभी भी टाइम दे रखा हो ना तो टाइम को एरर मत कर देना क्योंकि जो टाइम है ना वो चेंज नहीं हो सकता टाइम फिक्स्ड होता है एंड यू हैव टू डिसाइड द टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम Okay, Vibhor, one approach is that obviously you take my session on tenses, so that is one. ठीक है अदरवाइज देखो आप ध्यान से सुनोगे ना तो ये कंसेप्ट बाय कंसेप्ट भी आप पिक कर सकते हो देखो इन टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड ऑल थ्री कंडीशनल्स थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन था सेकंड कंडीशनल क्वेश्चन था जिसमें इमेजिनरी की मैंने बात की थी अभी फर्स्ट कंडीशनल की अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल मींस वेयर यू हैव अ सिचुएशन दैट इज एक्चुअली पॉसिबल इन फ्यूचर ठीक है सो इफ यू गो थ्रू दिस सेशन एंड यू जस्ट गो थ्रू द लॉजिक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड in all three questions I have picked up one question from second one question from first and one question from third अभी जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है फर्स्ट कंडीशनल है ठीक है so let's see okay so Apurv says C option Divan says C option Rashi says C option Lokendra says C option Soumya says A option good okay so guys anyone else would like to take a guess on this question Okay. So let me tell you how many of you have got this right. Okay, as I can see, Soumya. Okay, Soumya Goel. Okay. Okay. So I can see, guys, only one person has got this question correct. Okay, Soumya Goel has done it correctly. Only one person. Okay, because see, जो यहाँ पे मैंने जो नाउ अटैच किया ना, उससे बड़ा क्या कंफ्यूजन हो गया. अभी यहाँ पे क्या नाउ को अगर मैं हटा देता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, बट अभी मैंने नाउ अटैच कर दिया, which is actually an adverb of time, right? And how does this affect this question? And let me tell you the concept. Concept, guys, is fairly simple. Okay, if you pay attention to the concept that I'm just going to explain, okay, and if anyone has ever seen the tenses का chapter, आप में से किसी भी बच्चे ने अगर टेंसेस कभी देखा है तो आपको कंसेप्ट ना क्लिक हो जाएगा ठीक है तो बस आपको ध्यान से सुनना है व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन यस सुनीति करेक्ट आंसर ओके सुनीति हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली सो गाइस दिस इज हाउ इट इज okay first the concept is time decides the tense that means you can never change the time whatever time is given you have to accept it as such and then according to time you have to decide the tense now this is guys a very important concept because अभी पता है कि कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि टाइम को चेंज कर दो ना ठीक है आंसर सही हो जाएगा ठीक है लेकिन टाइम तो फिक्स्ड है now what is time look at this now present guys present ठीक है so what I've done is I have written now indicates that this is something a situation of the present अभी क्या है इसको मैंने प्रेजेंट में फिक्स कर दिया अभी क्या मैंने इसको प्रेजेंट में फिक्स कर दिया अभी तुम मुझे एक चीज बताओ अगर कोई चीज मैं प्रेजेंट में फिक्स कर रहा हूं और फिर मैं इफ लिख रहा हूं ठीक है तो ऑब्वियसली वो इमेजिनरी हो जाएगी लाइक कैन आई से इफ आई हैव मनी क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इज इट करेक्ट टू से इफ आई हैव मनी ऑब्वियसली वुड से कि यार आप हैव लिख रहे हो V1 फॉर्म लिख रहे हो बट द प्रॉब्लम इज दैट यू आर मेकिंग इट इमेजिनेशन नाउ व्हेन यू मेक इट इमेजिनेशन व्हाट डू you cannot write V1 when you make it imagination you have to convert it into V2 which is basically your past subjunctive अभी ये जो फंडा है ना ठीक है ये वैसे तुम्हें पता होगा क्योंकि जनरली अपन बोलते हैं ठीक है इफ आई वर रिच बट तुम्हें रीजन नहीं पता होगा ठीक है इफ आई वर रिच तो पता है इसका रीजन क्या होता है व्हाई डोंट यू से इफ आई एम रिच you know why because this is imaginary and because this is imaginary you convert the V1 into V2 now this V2 is actually showing imagination of present अभी तुम ये मत सोचना कि वर्क का मतलब ये है कि भाई ये प्लूरल है या फिर कुछ और है या पास्ट टेंस है पास्ट टेंस नहीं है this is basically imagination so when you want to convey a sense of imagination in present you convert V1 into V2 which is basically your conversion into past subjunctive ठीक है सिंपल लैंग्वेज में
अगर तुम्हें प्रेजेंट टेंस की इमेजिनेशन को इंडिकेट करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मेन वर्ब को जाके V1 से V2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइस, ये क्लिक हुआ? मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल, लाइक आई एम जस्ट पिकिंग अप द सिंपलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको वो ट्रिक भी काम कर जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको जितना बेसिक कर सकता हूँ ना, जितना इजी कर सकता हूँ, वो मैं उतना इजी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इजी वाला देखो फंडा बहुत सिंपल सा है। व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इमेजिनेशन इन प्रेजेंट, when you find that there's a situation of imagination in present, just convert V1 into V2. The moment you convert V1 into V2, it becomes a case of past subjunctive. Past subjunctive is basically second form the verb that indicates imagination of the present. ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। Second form the verb is not past tense here. It just indicates imagination of the present. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा if I had money, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ अभी प्रेजेंट में कि अगर मेरे पास पैसा होता। This is imagination of the present. This is imagination of the present. Okay. So guys, I hope ये concept समझ में आया. Now come back to the question. Now I have already written present. Now लिख दिया. That means present tense तो यही हो गया ये. Now क्योंकि तो टाइम बता दिया मैंने now. अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे if लिखा हुआ है. if का मतलब imagination है. imagination कब का है? present का imagination है. imagination कब का है? present का imagination है. So I have to convert V1 into V2. V1 into V2 means M becomes what? ठीक है, M becomes were। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मत पूछना कि सर M को मैंने was में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि उसका एक लॉजिक ये होता है दैट इन पास्ट सब्जेक्टिव यू डोंट यूज द सिंगुलर वाला was, वी ऑलवेज बाय डिफॉल्ट यूज were। ठीक है, बट द आइडिया इज दैट आई एम सिंपली कन्वर्टिंग V1 into V2। ठीक है, आई एम सिंपली कन्वर्टिंग द मेन वर्ब दैट इज इन V1 into सेकंड फॉर्म दैट इज were। ठीक है, ओके, अभी जब भी कभी टाइम रहेगा तो मैं वो फंडा समझा दूंगा कि was क्यों नहीं यूज होता, बट अभी के लिए you can just understand that whenever you have situation of imagination, you have to simply convert is mr into were। You have to simply convert is mr into were, which is basically converting V1 into V2। Okay, so this is guys imagination of the present। Okay, so this is the logic। I hope I have been able to explain you the logic। Okay, this is the answer। Answer is option A। Guys, very conceptual questions। ठीक है, हो सकता है like I have tried to like what you can say fit a lot of content in this one session। ठीक है, तो हो सकता है कि भी तुम्हें 2-3 इसको एक बार देखना पड़े वापस। ठीक है, बट देन दैट इज द लॉजिक दैट वी हैव। ओके, सो लेट मी पिक अप द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1.5 आवर। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन वी वाइंड अप द सेशन। ओके, so coming to the next question, so guys this is a question again a different topic। this is guys prepositions ka question। prepositions, okay, prepositions। Okay, have a look at the question and tell me what should be the answer। Okay, Apur says A option। Okay, good। Okay, Soumya says C option। Okay, good Soumya। Rashi says A option। Okay, anyone else would like to answer this question? Puneet says A option। Suniti Bajpayee says A option। यार ए ऑप्शन बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, अपूर्व, राशि, पुनीत, सुनीति। ओके, ए ऑप्शन यार सबका ए ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। ओके, लोकेंद्र ने भी ए ऑप्शन। ओके, लोकेंद्र आल्सो सेज ए ऑप्शन। ओके, okay, so guys chalo let me tell you the answer। okay, Utkarsh C option। okay, now see, the answer is option C। Soumya Goel has answered the question correctly। okay, so there is one student Soumya। okay, Soumya has given a lot of correct replies, so Soumya, this answer is also correct, C option। okay, very good। Utkarsh has also given the correct answer, good। okay, now let me just tell you why C option and like what is the meaning of this word। see guys, commensurate is like something that matches। for example, if my salary matches with my hard work। ठीक है, अभी देखो कैसा रहेगा, जैसे सपोज करो कि आपने कहा कि यार मैंने ना काम तो बहुत किया। ठीक है, अभी लाइक लॉट ऑफ पीपल हु गेट जॉब्स आफ्टर एमबीए, वन ऑफ देयर लाइक टिपिकल कंप्लेंट्स इज कि यार काम तो इतना कराते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में कंसेप्ट क्या होता है, इंडिया के अंदर लाइक यू डोंट गेट पेड बाय द आवर, यू गेट पेड बाय द मंथ्स, राइट। ओके, सो पीपल कैन एक्सप्लॉइट यू।
एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस ग्राउज एट द एंड ऑफ द मंथ दैट यार काम तो बहुत ज्यादा करा लिया लेकिन पैसे उतने नहीं दिए, मजा नहीं आया, लाइक पैसे और बड़े कम दिए, ठीक है. सो देन व्हाट यू से, you will typically say that my salary does not commensurate with my job. So when you say my salary does not commensurate with my job, it simply means that it's not equal, it's not in balance, it's not इन कंसेंसस, ठीक है, काम ज्यादा कर रहे हो सैलरी कम मिल रही है, देयर इज अ मिसमैच. when you have a salary that is equal to your work, then you will say that my salary or my reward commensurates with the work. Okay, so guys, you have to understand that in order to understand the prepositions, first of all you need to understand the word itself, and then you see which preposition goes with that a certain word. कुछ cases में you have prepositions with multiple sorry, words with multiple prepositions, but then that is something that you can learn with contextual understanding. ठीक है. एक last suggestion before I take you to the end of the session. See, at this point of time, one of the cliche suggestion is that you can get books and like you can obviously go through these books and like do the questions and all that. But I would suggest that try doing a variety of questions, okay, and just pick up the most important questions. Obviously, one thing is that you can always attend my sessions, because in my sessions I would be covering a lot of different concepts, and I would ensure that I cover all the important concepts, including all the snap questions, right? So the thing is that just try to capture the most important fundas, the most important questions, क्योंकि यार vocab and grammar, these are two diverse areas, like they're very vast, it's impossible to cover them. ठीक है, आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, एंड लाइक यू माइट बी द बेस्ट पर्सन इन vocab or grammar, but still you won't be able to manage everything, right? Okay, so you can only manage to do the most important things, okay, and that is the focus. ठीक है, like for example today we discussed, so I just focused on the important concepts. Okay, so guys, that will be all for the today's session. So there are some just some messages, and before we wind up, okay, this is something that you need to do now, guys. Those of you who are already following me on the app, okay, well and good. आप जो Unacademy का ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में से, use my code HSING. Now there are two things. One is that you obviously have the plus subscription, so anyone who is preparing for 2021 or who is again planning for 1 year can obviously use my code if my sessions have been helpful. Okay, so the idea is that if you use my code, that helps the algorithm to identify me as an educator, and it also helps me in getting my courses popular. Okay, so obviously that is one benefit that I get. Second, even if you are going in for a free subscription, ठीक है, अगर आपका free भी आपका course है, तो now there is an option that you can use the code. So that is, otherwise also you can use the code, and it will give you access to all the good content, the free content that you have. Now the sessions that I have on the app are free sessions, okay. So even if you are not a paid student, okay, like you can always take advantage of those free sessions, okay. Abhi, as of now, like I have already uploaded around 3 to 4 videos on vocabulary, so you can always go through it. And in the upcoming month, okay, 1 month, I would be taking a lot of discussions on grammar. Okay, so if there is any student who is interested in grammar in general, okay, or if you enjoy doing vocabulary, I think those sessions will be a lot of value adding. And obviously, there's some student who wants to like obviously go in for 1 year, then you can always use my code HSING. ओके, फ्री सेशंस भी हैं उसके अंदर, मेरे काफी सारे फ्री सेशंस हैं, ठीक है, 15 सेशंस आई थिंक अभी हैं, ठीक है. सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दोस फ्री सेशंस, एंड इवन इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस कोड, ठीक है. तो अभी उसमें एक ऑप्शन है कि भाई यू कैन यूज दिस कोड इवन इन द फ्री सेशंस, राइट. सो and that would help the algorithm to make my courses more popular. Okay, so that's going to be a help for me as well. Okay, so I hope you enjoyed the session, and like that was value adding, और हम लोग मिलते रहेंगे in upcoming sessions, and you can always be a part of these sessions, right? Okay, so thank you very much. This is the code that you can see on the screen, and you can always use the code to get a 10% off. Okay, so see you guys. That's all for today's session. Thank you very much.